Hello students, इस लेक्चर में we are going to talk about the objectives, programs और activities जो थे non-corporation movement के. Now student, this movement had taken place and it is a very important movement. इस movement को milestone भी माना जाता है Indian nationalism का. 1857 के बाद कोई major revolt हुआ तो वो non-corporation movement था. इस movement में Indians, including lot of the classes and caste, came together to fight against the Britishers. Previous lecture में हमने इसका background जाना है, इसके causes जाने हैं. आज देखेंगे how this movement actually was proceeding from one step to other. To begin with, let's talk about the timeline of the movement. Timeline जानना जरूरी है to create a better picture in the mind how the movement was evolving. Students, it was during the time of May 1920. यहाँ टर्की को जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की वॉज डिसमेंबर्ड, उसको डिसमेंबर कर दिया था किसने? ब्रिटेन ने. राइट, इट वॉज डिसमेंबर्ड. बहुत डिसरिस्पेक्टफुल सिनेरियो था. इंडियन मुस्लिम्स वर अनहैप्पी विद दिस ब्रिटिशर्स एक्ट. सो दैट वॉज द वेव जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो आवाज उठने लगी इंडियन मुस्लिम्स में भी. देन केम द टाइम ऑफ अगस्त 1920. इस टाइम पे एक सेशन हुआ कांग्रेस का और उसमें ये डिसाइड किया गया कि नाउ फॉर्मली नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट शुड स्टार्ट, को शुरू करना चाहिए. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस मूवमेंट शुड बिगिन. राइट, इसको एक सैंक्शन दिया गया. एज द टाइम प्रोसीड केम द टाइम ऑफ सितंबर 1920. स्टूडेंट्स, इन दिस टाइम finally a session was held which was in Calcutta और डिसाइड किया गया कि everything related to Britishers will be boycotted. There will be boycott for sure. There will be boycotting of Britishers and their goods. Right? इस चीज को क्लियरली डिसाइड कर लिया था. इस सेशन में प्लान हुआ कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाना है. फाइनली when everything was discussed and decided during the time of December, yes students, December 1920, finally the non-corporation movement began. Finally movement began. Right? अब movement शुरू हो गया. अब movement के objectives क्या हैं, programs क्या हैं, activities क्या हैं. पहले it was a huge movement that included more than lakhs of people. More people had come together. As compared to 1857, people have fought against the Britishers. So we will see the objectives. We will note down the objectives. पहला objective ये था इस movement का that the goal of the movement was self-government, या स्वराज कह सकते हैं. कांग्रेस और कांग्रेस की जितनी भी कमिटीज थी उन्होंने डिसाइड किया कि स्वराज या सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया को मिलनी चाहिए. राइट, या तो ब्रिटिशर्स के रहते रहते मिले या ब्रिटिशर्स के ना होने पर भी इंडिया को रूल मिलना चाहिए. राइट, स्वराज एंड सेल्फ रूल बाय इंडियंस, ये डिसाइड किया गया. पहला गोल. दूसरा, कुछ ऐसा किया जाना चाहिए बाय ब्रिटिशर्स दैट रेमेडी टू बी प्रोवाइडेड फॉर पंजाब एंड खिलाफत इशू. मीन्स there should, whatever error has happened, it was a draconian law or a draconian act that was done. पंजाब में अमृतसर जलियांवाला बाग में जहां बहुत सारे इंडियंस ने लूज देयर लाइव्स. सिमिलरली खिलाफत मूवमेंट में जो टर्की के खलीफा के साथ डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर किया गया, उससे द इंडियन मुस्लिम्स वर वेरी एंग्री विद ब्रिटिशर्स. जब तक ब्रिटिशर्स इन दोनों एक्ट के लिए अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराते तब तक ये मूवमेंट चलेगा. That was the demand. और तीसरा, स्वराज. ये ऑब्जेक्टिव्स क्लियर थे इस मूवमेंट के. गांधी was taking the leadership. He was supported by Tilak, Aurobindo, C.R. Das and lot many members for this particular movement. Now, what was the program? What were they looking at? The program was simple. They wanted to establish what you call Swadeshi. यहाँ वेव था स्वदेशी वेव. यूज ऑफ खादी प्रोडक्ट्स. राइट, खादी प्रोडक्ट्स बनने चाहिए, स्वदेशी यूज होना चाहिए. बाइकॉट, ब्रिटिशर्स शुड बी बाइकॉटेड. देयर शुड बी रेजिग्नेशंस
from posts of lawyers, from students. There should be resignations from students, lawyers, etc. People who are working for Britishers actually should resign. They should leave the job they are doing, right? So this was the wave which was getting created कि हम Britishers के अंडर अब काम नहीं करेंगे. We will come on the street and raise a war. Tilak Fund was created. Tilak Fund, which was collecting amount to raise this movement. Obviously money required होता है, तो lot of people were doing that. This was the program that was going on. Then there was removal of untouchability. रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, ये भी प्रोग्राम का एक एम था, ताकि जो लोअर कास्ट्स हैं वो भी दे शुड गेट टुगेदर एंड फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. ऑल्सो द यूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स वॉज द एजेंडा. यूनिटी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स. और ये हो रहा था स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि खिलाफत इशू जो नॉन कॉर्पोरेशन से जिस पहले होने लगा था उसमें गांधी ने सपोर्ट किया था, और इसीलिए बहुत सारे मुस्लिम्स ने बढ़ चढ़कर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया. राइट, दे लेफ्ट देयर लॉयर पोजीशंस, दे केम ऑन द स्ट्रीट टू टॉक अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. ऑल दीज थिंग्स वर हैपनिंग. देयर वर मेजर एक्टिविटीज क्या थी इस मूवमेंट में? फॉर एग्जाम्पल, पिकेटिंग ऑफ शॉप. आई एम जस्ट गिविंग यू फ्यू एग्जाम्पल. पिकेटिंग ऑफ शॉप्स, डूइंग हड़ताल्स, establishing schools were getting established like Kashi Vidyapeeth, Bihar schools, Bihar University. All these universities were getting set up. 900 new schools had been formed, right? Kyunki 90,000 students leave their colleges and schools. That was the determination to fight for nationalism. So all these were be the activities. The movement was spreading. Housewives, lawyers, students, etc. all were participating. So we can say the movement was spreading majorly. Well, that was a success point. Gandhi had collected this complete set of people. This mobilization जो गांधी कर रहे थे, जो हर तबके, हर कास्ट के लोग एक साथ जुटकर इस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करें, और ऐसा हो रहा था. So this movement was spreading slowly to major parts of the country. Students, in this lecture you see we have studied timeline क्या है इसकी, how this movement progressed. हमने objectives देखे हैं इस movement के, क्या programs थे वो देखे हैं. We have also talked about the various activity of this movement. That calls an end to this lecture for today. See you for next lecture.